अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू BTH लर्निंग सेंटर। जी फ्रेंड्स, तो हमने कल न्यू अपना टॉपिक स्टार्ट किया था विच इज़ सब्ट्रैक्शन। कल हमने सीखा था कि फ्रॉम द वेरी बिगनिंग और बिल्कुल स्टार्ट से स्टूडेंट को सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट जो है वो किस तरह से देते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे सब्ट्रैक्टिंग टेंस विदाउट रीग्रुपिंग। अब हम प्रॉपर उसकी जो है सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन पे आप कह लें उसके सम्स के ऊपर आ जाएंगे। सो सबसे पहले स्टूडेंट्स को बेसिक कॉन्सेप्ट देने के बाद हम स्टूडेंट को बिल्कुल स्टार्ट से मतलब बहुत इजी एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे ताकि उनको सब्ट्रैक्शन जो है वो टफ ना लगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सब्ट्रैक्टिंग टेंस विदाउट रीग्रुपिंग। अब ये जो रीग्रुपिंग है इसका जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ इन एडिशन वीडियोस। तो आप क्या कर सकते हैं, आप मेरी एडिशन के टॉपिक की जो वीडियो है उसमें जाके जो है ये रीग्रुपिंग इसके कॉन्सेप्ट को आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं ना। लेकिन इधर भी इस वीडियो में भी मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा गाइड साथ साथ करती रहूँगी, बट डिटेल में आपको ये रीग्रुपिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो एडिशन की वीडियो में मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, दैट इज सब्ट्रैक्टिंग टेंस विदाउट रीग्रुपिंग। सो फ्रेंड, व्हाट आर टेंस? वो नंबर्स जहाँ जो सारे टेंस की प्लेसेस पे होते हैं, लाइक उनके वंस की प्लेस पे कोई नंबर नहीं होता। सो इसके ऊपर भी मैं आपके ऊपर साथ एक डिटेल टॉपिक बनाऊंगी। मैं इस टॉपिक पे भी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको इसके बारे में गाइड कर सकूँ। सो लेट्स स्टार्ट नाउ सब्ट्रैक्टिंग टेंस विदाउट रीग्रुपिंग। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल लाइक सब्ट्रैक्ट हमने वो नंबर लेना जो टेंस की प्लेस पे हो, जो टेंस पे हो। लाइक सब्ट्रैक्ट 40, इसको हम 4 टेंस भी पढ़ सकते हैं। फ्रॉम सॉरी, सब यहाँ पे स्मॉल नंबर आएगा। सब्ट्रैक्ट 20 फ्रॉम 40। ठीक है, ये हमारे पास सम है, सब्ट्रैक्ट 20 फ्रॉम 40। सो एडिशन में भी मैंने आपको गाइड किया था। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू आल्सो गाइड यू दैट first you have to write the places on the numbers. When you will write the places, there will be no chance of mistakes. So write here the places. 0 is on the ones place and 4 is on the tens place. Same here, 0 is on the ones place and 2 is on the tens place. So you may write here two places. We have two places number, two digit number, so ones and tens. ठीक है, so I have written here ones and tens. Now from here, which number, okay, in subtraction always guide to the student that which number is the bigger, that will go on the first place. Here 20 is smaller than 40, so 40 is the biggest number or bigger number, so 40 will we will write 40 on the first place. Like here in 40, 0 is on the ones place, I'm going to write here 0, and 4 is on the tens place, I'm going to write here 4. And here 0 is on the ones place and 2 is on the tens place. So this is the sign of subtraction. So I'm going to subtract these number. अब मैंने आपको कल गाइड किया था कि आप लाइंस भी ड्रॉ सकते हैं, बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ड्रॉ 40 लाइन्स और 40 ऑब्जेक्ट्स, एनीथिंग यू वांट. सो व्हाट यू हैव टू डू हेयर, हम इसको सेपरेटली जो है वो सॉल्व करते हैं. लाइक फ्रॉम हेयर इफ़ on the place ones place there is 0, you have to draw nothing. So when something goes from 0 and like 0, when you have nothing, you can't give anything to the other person. So from 0 minus 0, 0 will come here. So when you have nothing, someone is asking you about the razor but you don't have any razor, so how can you give a razor to the other person? So that's why from 0 minus 0 will result in 0, like you have nothing here. Now what is on the tens place? Here is 4 is on the tens place. I'm going to draw here 4 lines. So what you have to do, I'll suppose that these are 4 pencils. Now your friend is asking that give me 2 pencils please. Now you have to give 2 pencils to your friend. So let's cross the 2 pencils. I have crossed these 2 pencils. Now how many pencils are left? 2 pencils are left, so I'm going to write here 20. So when we will subtract 20 from 20, so 20 is the result. जी फ्रेंड्स, ये सेम जो सम है
वो कुछ बुक्स में आपको इस तरह से भी मिलेगा, लाइक 40, here is 40 and you have to subtract 20. So 20 shows that it is a 2 tens, so you have to subtract tens 2 times, minus 10 again, sorry, you can make box here, and again you have to subtract 1 time, so the result will come here. So when you will subtract, you can do backward counting, like I'm going to write here counting in tens: 10, 20, 30 and 40, and you have to subtract first 110. When will you jump back, the result will be 30, you may write here 30. Now again you have to subtract 110, like you have to jump backward one time, so 20 will come here, so 20 is the result. In some books you will also notice this, so you can guide your students that you can do here backward counting, like let's suppose uh, I am having a bigger number here, like I have to subtract here 90 and I have to subtract 30 from 90. Okay, so if by using this backward counting I can do like this, like 10, first write the backward counting: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 and 90. Now here 30, write the places over here, it shows 3 tens, like you have to jump backward 3 times. Here's the number 90, so you have to jump 3 times: 1, 2 and 3, you have to jump 3 times. So on which tens you are standing here, like you are standing here on 6 tens, so 6 will go in the tens place and 0, so 60 is the answer. So subtracting tens without row grouping, you can also do it with backward counting, backward jumping, or by using this method. So फ्रेंड्स एक हम जो है एग्जांपल और डिस्कस कर लेते हैं. Now what number you should write here, you may write here 70, or you may write complete sum subtracting 40 from 70. Now what will be your first step? First you have to write the places over here on the numbers, like 0 is on the ones place and 7 is on the tens place. Here 0 is on the ones place and 4 is on the tens place. Now write the places here also, 0 and ones and tens. So which number is the bigger number from 40 and 70? I have also explained this concept in my previous video. You can see the video arrangement of number from the smallest to the greatest or greatest to the smallest. Like मैं थोड़ा सा explain कर देती हूँ. Like from here, if you want to know which number is bigger, you have to compare the tens from here. 7 is bigger than 4, so 70 is the biggest number because there is nothing on the ones place. So 0. Now here 40, you have to subtract here. Now if you have nothing, you can't give nothing to the other person, so from 0 minus 0, 0 will come here. And now here 7, I have to draw the 7 pencils, like 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Now my friend is asking that give me please 4 pencils, so 1, 2, 3, 4. So I have given to her these 4 pencils. Now how many pencils are left? 1, 2, 3. 3 pencils are left. And by using the backward counting, I'm also telling you here 70, 10, 20, 30, 40, 50, 60 and 70. Now here are 4 times, like you have to jump 4 times: 1, 2, 3 and 4. On which tens you are standing here? Like you are standing on 3 tens,
So 30 is the answer. You can compare that 30 is the answer. So in this method, by using this method, when you are subtracting tens from tens, you can do backward jumping like this, and you can use this method. So friends, ये थी मेरी वीडियो आज की. So I've tried that give this topic in the most easiest way. So अगर आपके पास इससे भी easy कोई method है, वो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं. एंड फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम नॉलेज को दूसरों तक पहुंचा सकें. ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़.